पीटीआई हुकूमत ने बुलंद दावों के साथ मिनी बजट तो पेश कर दिया और अब सरमायाकारी बढ़ेगी या कम होगी चंद दिनों में पता भी चल जाएगा। हुकूमत ने मिनी बजट में बैंक ट्रांजैक्शंस पर फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने और घर बनाने के लिए अवाम को कर्ज हसना फराहम करने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजावीज़ दी हैं और वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने कौमी असम्बली में बजट तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वाले अफराद ज्यादा टैक्स देकर 1300 सीसी तक गाड़ी खरीद सकेंगे। वजीर खजाना ने छोटे शादी हॉलों पर आए टैक्स 20,000 से कम करके 5,000 करने और 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। 10,000 के मोबाइल फोन पर 400 रुपए, 28,000 के फोन पर 4,000 रुपए टैक्स होगा। सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक मोबाइल कार्ड पर टैक्स आयद नहीं किया गया है। हमेशा की तरह हुकूमत इसे अवाम दोस्त और अपोजिशन अवाम दुश्मन बजट करार दे रही है। किसी जगह उन्होंने ये बताया हो कि हमारी इस रियायत के हमें इतने अरब का खसारा होगा, हमारे इस इकदाम से हुकूमत को इतने अरब की आमदनी होगी। अपना घर स्कीम के लिए सिर्फ 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अगर आपने बोरोइंग करके ही मुल्क का काम चलाना है तो आप पिछली हुकूमत पे खासकर डॉक्टर साहब पे क्यों इतने खफा होते थे हर वक्त? आपका जो रेसिपी है वो तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि आप डोमेस्टिक बोरोइंग से ज़्यादा इंटरनेशनल बोरोइंग कर रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि वज़ीर ख़जाना का कहना था कि स्टॉक एक्सचेंज मईशत की अक्कासी नहीं करती। नून लीग के दौर में मई 2017 में मार्केट 53,000 पर थी और दिसंबर में 17,000 पॉइंट्स कम होकर 38,000 पर आ चुकी थी। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि जब हमारी हुकूमत में 5,000 पॉइंट्स कम हुई तो शोर मच गया कि मईशत ख़त्म हो गई। इस करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के एमडी रिचर्ड मॉर्वन। रिचर्ड, good morning and welcome to Geo Pakistan. Thank you very much. Although I'm really eager to know that have you tried Karachi spicy biryani, but that comes later in the show. We are going to talk about budget and economy. We are going to talk about budget, but you know, in the introduction you did mention that Richard is from Canada. So is the Niagara Falls actually frozen in winters and you can skate on it? You know, I do not know. I've never been to Niagara Falls in winter, but I can tell you one thing. This Canadian was happy to be in Karachi last week. When weather in Toronto went down to 30 degrees below zero, I was very happy in Karachi. See the perks of Karachi. You like to be here because of the weather. So Richard कह रहे हैं कि जब कनाडा में -30 से नीचे टेम्परेचर चला गया था, he was really happy and satisfied because वो कराची में थे, उनको इतनी ठंड में नहीं रहना पड़ा था। तो हम सोच भी नहीं सकते। But let us talk about the budget now. Richard, tell us about the overall sentiment among the people at stock exchange as well and otherwise about this mini budget. How are they feeling about it? Very positive. I think Asad Umar tabled the budget yesterday, which is very positive for the economy. It's positive for the stock market, and it's particularly positive for long-term investors in the stock market, and that's very good news. The development of the stock market and capital markets in general is essential for the economic success of Pakistan, and this budget goes in that direction. Very positive. All right, Richard, let's talk about, you're talking about the long-term investment, let's talk about the foreign investors. Would they be more inclined towards investing in Pakistan, particularly the stock exchange in Pakistan after this development? I think the factors that affect the investment decisions of foreigners, there are more factors than for local investors. But to simply answer your question, the answer is yes. Whatever is positive for Pakistan's capital market is bound to attract more foreign investment. So in that regards, yes, it's positive. But I think the measures are have more immediate impact on local investors. And in my view, the most powerful measure that was adopted are the two measures that affect capital gains taxes. So capital losses can now be carried forward for 3 years. It may sound technical, but it's very important. It's a measure that's in place in most developed markets, and it's very positive that Pakistan is moving towards best practices in that regard. So that measure, in addition to an exemption on tax on capital gains for stocks held for more than 3 years, the two measures together
increase the after-tax return of long-term investors in the stock market. And that's what's very powerful as a measure in this budget. ठीक, रिचर्ड ये कह रहे हैं बेसिकली कि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है मार्केट का बहुत पॉजिटिव है और कुछ मेजर्स का इन्होंने तस्करा किया, जैसे कि अब आपके जो लॉसेस होते हैं यू कैन कैरी देम फॉरवर्ड फॉर लाइक अप टू 3 years. आप जो लॉसेस हैं अपने स्टॉक एक्सचेंज के अब 3 साल तक आगे लेकर जा सकते हैं, और दीगर कुछ मेजर्स हैं जिसके बिना पर ये कह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ओवरऑल जब किसी भी मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल होती है, कैपिटल मार्केट कुछ अच्छा परफॉर्म करती है, तो इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता ही है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. ये भी हमने आपको इनसे पूछना था. और एक और चीज़ जो हमने इनसे पूछनी है वो है कि वेदर इन लोगों की सजेशंस भी ली गई जब ये मिनी बजट आ रहा था. एंड रिचर्ड विद अस वी कैन आस्क, वी आर वेरी क्यूरियस टू नो, ऑब्वियसली यू आर इन अ पोस्ट वेयर यू कुड गिव अ लॉट ऑफ सजेशंस एंड आइडियाज. Did the government or even Asad Umar, did you meet him? Were they even taking any suggestions, you know, that you can pass it on to us and maybe we can implement it in the budget? The answer is yes. We have both PSX and the stockbrokers have a very constructive relationship with the Minister of Finance. And some of the measures that were adopted in this budget have been the objective of long-term lobbying on the part of both PSX and the brokers. So yes, they've taken some of our suggestions, and I'm very hopeful and confident that in the future they will continue to adopt measures that are suggested by PSX. Some of them are adopted in the budget, but there are many non-budgetary measures that the Minister of Finance can put forward. Minister of Finance and a CCP and State Bank can adopt to promote the development of capital market and savings and investments. Different practices, you mean? Yes. I think we need to promote savings, long-term savings and investments, especially among middle-class Pakistanis. It's good for them, it's good for the economy, and it's good for Pakistan. ऑलराइट, सो रिचर्ड ये कह रहे हैं कि बहुत सी सजेशंस जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से दी गई थी, वज़ीर ख़जाना साहब ने उन्हें शामिल किया है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बजट से हटकर कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो ओवरऑल लेने हैं ताकि कैपिटल मार्केट की ग्रोथ बेहतर हो सके. खास तौर पे जो सेविंग की बात की है, ओवरऑल अगर आप मिडिल क्लास पाकिस्तानी फैमिलीज को देखें तो वो सेविंग होनी किस तरह चाहिए, वो भी सजेशंस में आया है. We are not really good at how to save money, and we are not really good at, you know, saving schemes and other instruments of saving that are actually available in the market. Richard, that's an interesting feature of this budget, because one of the issues in Pakistan is people tend to overinvest in real estate, yes, and underinvest in stock markets and bonds. One of the very interesting features of this budget is now capital gains treatment is equal among stocks and real estate. So logically that will give an incentive to Pakistanis to perhaps redirect some of their real estate investments in the stock market. Expected long-term stock market returns in Pakistan are extraordinary. You get 6%, 7% dividend yield on a Pakistan listed equity. To give you a comparison, in India, the dividend yield is 1%. So stocks in Pakistan are very attractively priced. We've been saying so for a long time. And this budget makes it even more attractive than it was before. सो रिचर्ड ये कह रहे हैं कि लोग हमारी बात होगी. हाँ, हमारी ट्रेंड ये है, और हमने भी ये देखा है कि कुछ नहीं करना, पैसे प्लॉट ले लेते हैं. रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने से बेहतर है. ट्रेंड्स आर चेंजिंग, यू शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट क्योंकि रिटर्न्स उस पे बहुत अच्छे हैं. लेकिन हम हमेशा यही कहेंगे कि आप समझ जरूर लें, पहले आपको खुद समझने की जरूरत है कि ये होता किस तरह है. मतलब वरना तो पूरी दुनिया कर रही है अंधों की तरह, आप भी घुस जाए, इस तरह नहीं होता. यू हैव टू रियली नो व्हाट यू आर डूइंग. फाइनली रिचर्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कुड यू आइडेंटिफाई सम इंडस्ट्रीज और एरियाज और एवेन्यूज where foreign investment could come in? I think a stockbroker or a money manager would be in a better position to answer that question. I'm a stock market manager, I'm an exchange manager. I think foreign investors will come to Pakistan and probably invest in market leaders. So in each industry, they tend to look for market leaders. And they tend to invest in companies with considerable growth potential, and there are very attractive companies listed on PSX, companies with incredible growth potential.
Pakistan is underdeveloped in many economies, and that's an attractive feature. Absolutely, there's a lot of room for growth. Yes, because when a market is underdeveloped, generally profit margins and growth opportunities are higher. That's what makes Pakistan attractive. All right, Richard, lastly, the question which is stuck in my mind for quite some time now. How long has it been that you have been living in Karachi? 1 year. I 1 year. You must have my tried a lot of things because, you know, Pakistan Stock Exchange is nearby the food street of Karachi. Oh, so yes, have you tried absolutely. Karachi's typical spicy biryani or other local foods here? Absolutely. I love Pakistani food, but as I say, as a Canadian, I can't eat it twice a day. You can't eat it too. Is it too spicy for you? It's a bit on the spicy side for me. Stay another It's couple very of good. years and you'll be there with us with the spicy food. Thank you so much, by the way, for coming here. Thank you. And explaining to us how the positive features of this budget as well. Thank you very much, Richard. Thank you. It was good to have you over. अच्छा जी, ये तो हमें अच्छा लगा, तो लिहाजा ओवरऑल हम आपको सेंटिमेंट सुबह से बता रहे थे कि मिनी बजट का हम पहले जरा, लोग जब बजट का नाम सुनते हैं ना जरा खौफजदा हो जाते होते हैं कि कोई ऐसी चीज आने वाली है जो शायद हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अभी जो बजट, जिस मिनी बजट की हम बात कर रहे हैं, हमें यही लग रहा है कि इसको पॉजिटिवली लिया गया है। बिल्कुल लिया गया है स्टॉक एक्सचेंज में भी और बिजनेसमैन की तरफ से भी।